Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today's class is about bar graphs and error bars. So, the thing is that what are bar graphs? One of them is in front of you. You can see this is a type of a bar graph, and we will try to understand this, how this is made, and what it indicates. Before I explain it to you, you people can see it and you can understand what is this by yourself. Try to understand by yourself, first of all. You can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars. Now what they indicate? These 6 bars indicates what? Something is written at the bottom, something is written at the left hand side, and this is the whole story about the bar graph. So, Bismillah ar-Rahman Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin in Nabil Ummi wa alihi wa sallim taslima. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is bar graph first, and in the second section we will understand error bars. What are error bars? So, for the first one, bar graph, I have already made a graph in front of you to see and understand first, and then we'll draw another graph after this. This graph shows you what? We have made a graph between, what is this? Apple, orange, banana, kiwi fruit, blueberry, grapes. These are the name of the fruits. And what is this on the vertical axis? Number of pupils who like a fruit. You can see that this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, by these bars, we can understand that how many people like which fruit. When we talk about the first one, the grapes, you can see that when I draw a line over here like this, from here to here, I will reach over here at 5. 5 pupils like grapes. Okay, we have collected a data. This is a data sample in which 5 people like grapes, then 10 people like what? This 10 people like banana. Okay, and then this one 25 people like kiwi fruit. The data is given in the form of bars instead of lines or points. It is given in the form of bars. You can see that these are the bars. Okay, come to the next one. This one 30 people like oranges, and then you can see that this is here. Okay,
35 people like apple and about 40 people like blueberries. This is a model bar graph which is in front of you, and we have evaluated the data from it, that how many people like which fruit in a data sample. Now we'll draw our own graph. We will plot our own data, and we find out then we find out that how we can plot a bar graph, how we can generate data, we can plot the graph, we can read the graph. All is very easy. You people, the new one who joined us right now, I should introduce myself. I am Dr. Mohammed Najam Yasin, Assistant Professor in Physics in the university in Pakistan. So nowadays we are taking live classes about physics and mathematics. So, for example, if you try to understand, if you try to remember that where you have seen these bar graphs before, have you seen somewhere these bar graphs? Yes, anyone? बार ग्राफ्स को कहां देखा, कभी देखा कि नहीं देखा? कहीं तो देखा है आपने. टीवी पर मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में कभी बार ग्राफ देखा? यस, नो? किस किस के बीच में बनता है ग्राफ? बिटवीन overs and runs. In which over how many runs have been scored? Okay. For example, I will put some data on the board and then I will draw. Let's suppose we have data like this. This is overs and this is runs. Okay. Let's suppose in the first 5 overs, the runs score was 45. Between over number 5 to 10, the runs score were 33. Between 10 to 15, the runs score were 58. And between 15 to 20, the runs score was 70, say. Okay. This is the data given to us, and we have to plot this data. So what you will do, if you have to represent such data, it's better to represent it by means of a bar graph. How we can make a bar graph for it? Select the axis. I took 2 axes. This will show runs and this will show overs. Okay. First, this is 0 point.
So till this point, we have 5 overs, 10 overs, 15 overs, and 20 overs. ये हमारे overs हैं, ठीक है? And what about runs? We have to take the runs on the vertical axis. So you can see that the minimum is 33 and maximum is 70. So this is 10. This is 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, and say this is 70. Okay? So for the first reading between 0 to 5, it started from this point, ended at this point. They have scored 45 runs. So where is 45? 45 is this one. So draw the lines and connect them. Two perpendicular, one at 5 and one at 45. When we join these lines, we'll get this bar. This is first bar. Okay? Move to the next one. 5 to 10. Between 5 to 10, they have scored 33. So where is 33? It might be over here. 30, 31, 32, 33, somewhere over here. Okay, move with this one. So this might lie over here. And this is 10. So join the two lines and get the result. This is the second bar. The third one, between 10 to 15 overs, the result is 58. This is 55, 56, 57, say this is 58. Okay, when we move like this, we'll reach over here at some here point. This is 15. This could be our next bar. And then come to the last one, 15 to 20, 70. Where 70 lies? 70 is over here. Yes. So this is how we can draw a bar graph. And this is how bar graph indicates different values. You can see that the first bar show you the data between 0 to 5 overs, and it's what? 45 runs. Then the second one shows you the data between 5 to 10 overs, and this is 33. Then 10 to 15 overs, the data give you the reading of 58. And then between 15 to 20, the result is 70. So is it clear to you, or you want to ask something, then please ask, otherwise we'll move further. Yes, hurry up. Yes, any question please? No question? Okay, then we'll move further. We'll take some other data.
Instead of overs and runs, we will draw the data for the grades obtained by different students in their examination. That how many have secured A grade, how many have A plus, how many have B grade, C grade and D grade. It is easy, you can make by yourself. Whatever data has been given to you, you can find out very easily. For example, another technique to represent. In this graph, I will show the other technique to you, how you can represent data. Yes, let's suppose this is grade, this is number of students. A plus, let's suppose 45 students. A grade 60 students. B grade 75. C grade 40. D grade 25. E grade 10 and F fail 20. Okay, we have to draw, we have to make a bar graph for it. What we'll do is, first of all, we have to mark it as we have already marked. You can check these marks are matching or not. The minimum result is 10 and maximum is 75. We have marking till 70. Okay, so we need 75. So say this is 75. This is 60 and all others are okay. This is what? This is number of students. This is number of students, and here we'll have grades. So let's start, starting by A plus. A plus is 45. A plus, this is say A plus. 45 is this one. This is A plus. Then B. B is 75. So this is 75. A remained. I forgot to plot A. So say if this is A, then what happened? This should be 60. Okay, so this is 60. This is what? A. Then B. B is 75.
This is say B. B is 75. Then C. C is 40. This is 40. Then D. D is how much? 25. This is say 25. This is D. And then E and F. E is how much? 10. This is say E. And then F. F is 20. This is 20 mark. This is F. So you have seen that it's much easier to plot data in a bar graph than in another graph. इसमें डेटा डालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत आसानी से आप इसको प्लॉट कर सकते हो और प्लॉट करके इसको आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, एवेलुएट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं या कोई क्वेश्चन है? अगर है तो प्लीज पहले पूछ लो। देन विल मूव टू एरर बार्स। एरर बार्स क्या होती है? शाबाश, हरी अप। यस हरी अप, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है किसी के दिमाग में तो प्लीज पूछ लें। कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो? शाबाश हरी अप। फिर हम मूव करेंगे एरर बार्स पे। एरर बार्स क्या होती है? ये सबको क्लियर है? तो चलें फिर आगे चलते हैं। एरर बार्स क्या होती हैं? आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल सबसे मैं आसान तरीन बात करने लगा हूं। आपने क्या किया? आपने अपना वेट किया वेइंग मशीन पर। ठीक है, आप जब अपना वेट करते हो वेइंग मशीन पर तो जरा जहन पे जोर डालो, वहां जो मार्क्स लगे हुए होते हैं उनके बीच में कितना फासला होता है? मतलब अगर 60 है तो 60 के बाद क्या होता है? 61 होता है या 60.5 होता है? शाबाश। और 60 से पहले क्या होता है? 59 होता है या 59.5 होता है? टॉकिंग अबाउट एनालॉग मशीन जिसमें नंबर लिखे होते हैं, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं। यस, नहीं याद आ रहा? या आ चुका और आप बताना नहीं चाह रहे? बताइए, शाबाश। अरे यार, क्या होती है एरर बार्स? उसके लिए आपको ये बात जरूर अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एरर बार्स अराइज कहां से होती हैं। एरर बार्स अराइजेस विथ मेयरमेंट्स। मेयरमेंट्स में जो एरर होते हैं वो एरर बार्स को अराइज करते हैं। एरर बार्स देखिए, मिसाल के तौर पे हमारी जो वेइंग मशीन है इसकी रीडिंग, मैं एक रीडिंग एग्जांपल के तौर पे पिक कर रहा हूं ना, ये 60 है तो यहां पे एक छोटा सा मार्क लगा होगा, उसके बाद यहां लिखा होगा 61। इसी तरह यहां एक छोटा सा मार्क होगा, यहां लिखा होगा 59, छोटा सा मार्क और यहां होगा 58। फिर इसी तरह एक स्मॉल मार्क और यहां होगा 62, स्मॉल मार्क यहां होगा 63, सो एंड सो फोर्थ, ये चलता रहेगा। ठीक है, हमें एक डेटा दिया गया, फॉर एग्जांपल हमें डेटा ये दिया गया कि नेम ऑफ स्टूडेंट,
और उसके बाद हमें दिया गया कि वेट, हिज वेट, ठीक है। For example, we have a student number, say name of the student is A, his weight is say 61. Student number B's weight is 58. Student C weighs 45. D weighs 67. E weight 53. F weight 64. Let this be our data. Okay. We have to draw a bar graph for this. And we have to find error bars as well. First of all, we'll draw bar graphs for this data. So this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. This is what? This is weight along the vertical axis. 55, 60, and our maximum reading is 67. So we should have the reading till 70. Okay. And at the other side we have 6 readings. So this is say for A, this is for B, this is for C, D, and say E. Okay. For A, we have to mark, and then we have F also. Okay. So first of all, we have to mark for A, and this is 61. So this is 60, this is 61. Fine. This is first bar. What we are trying to find out? We are trying to find out the error bars. Okay. For the B, B is 58. So okay, let's see where is B. I will leave some space between the two. Okay. B is 58. This is about 58. So this could be the B. Then C. C is how much? C is 45. This is 45. This is C. As I told you, I am leaving some space between them. So that's why these are changed slightly. This is C. And D will come over here. This will be E. And then F will move further. Okay. So for D, the reading is 67. 67 is here. Move.
This is 67. For E it's 53. So 53 is where? Here at some place, 53. This is E. And then we have to move to F. So F is how much? 64. Now these are simply what? These are the bars, only bars, not error bars. Now how they become error bars and what are the errors present over here? You can understand that अगर आप गौर से देखो, अगर एक बंदा है, आप खुद हैं, चलें, आप जो वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, आपका वेट आता है यहां कहीं पर, आप इस वेट को कितना कहोगे? क्या रीडिंग लोगे? इस जगह आप क्या रीडिंग लोगे? 60 लोगे या 61 लोगे? सिक्सटी लोगे या 61 लोगे? 60 लोगे। क्यों लोगे? 60 से आगे एक और मार्क है, 60 और 61 के दरमियान में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.5 को। अगर तो उस मार्क पर होता ये तो हम लेते 60.5, लेकिन ये 60.5 और 60 के दरमियान में है तो आपने रीडिंग ले ली 60। इसी तरह ये जो है आप 60 से आगे हैं, 0.5 इसके आगे है, 60.5, आपने 60.5 को टच नहीं किया है। आपको क्या फीलिंग है कि आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? 60। आपको यहां जो बार ग्राफ में शो करना है वो रीडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? राउंड ऑफ कंपाउंड रीडिंग होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, विदाउट डेसिमल चाहिए। तो विदाउट डेसिमल चाहिए तो रीडिंग क्या होगी? 60 या 61? तो आपका आंसर है 60। इसी तरह अगर आप यहां कहीं खड़े हैं तो अब आपका आंसर क्या है? अगेन 60, नॉट 59। तो आपकी जो रीडिंग है वो कहां घूम रही है? आपकी रीडिंग घूम रही है, अगर आप 60 पर हैं तो आपकी रीडिंग प्लस माइनस 0.5 के दरमियान घूम रही है। यानी अगर मैं प्लस 0.5 करूंगा तो मेरी रीडिंग बन जाएगी 60.5, और अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरी रीडिंग बन जाएगी 59.5। मेरी रीडिंग इन दोनों के दरमियान में है, 60 से 60.5 के दरमियान में और 59.5 से 60 के दरमियान में। तो मेरा जो एरर है वो एरर है 0.5 दोनों साइड पे, अप साइड भी और डाउन साइड भी। तो अगर मैं इसको अब उठाकर अपने 61 पे ले जाऊं जो मेरा रियल प्रॉब्लम है, तो 61 का मतलब है कि 61 की रीडिंग कहां तक आएगी? 61 की रीडिंग आएगी या तो यहां तक कहीं पर, यहां कहीं भी होगी 61 रहेगा, इसी तरह यहां से यहां तक कहीं पर भी होगा 61 रहेगा इस पूरे स्पैन में। ठीक है, यानी 61 प्लस माइनस 0.5 ये रीडिंग होगी। तो जो एरर है वो कितना है? 0.5 ऑन बोथ साइड्स, अप साइड एंड डाउन साइड। तो उस एरर को मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा ये इसकी मीन वैल्यू है और ये इसका एरर है, ऊपर भी और नीचे भी। ये है एरर बार, जो आपको क्या बता रही है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो लाई कर रही है बिटवीन दीज टू वैल्यूज, 0.5 ऑन बोथ साइड्स, अप साइड एंड डाउन साइड। इसी तरह हर एक के अंदर 58 में भी यही मामला होगा। 58 को भी आप इसी तरह एरर बार दिखाएंगे कि यार ये एरर थोड़ा सा या तो ऊपर है 0.5 या थोड़ा नीचे है। यहां भी आप कहेंगे कि 0.5 ऊपर है या 0.5 नीचे है। यहां भी आप यही कहेंगे 0.5 अप और 0.5 डाउन। ये मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू, ये अप और डाउन, और ये मीन वैल्यू।
ये ग्राफ बेसिकली इस्तेमाल होता है जब हमारे मेजरमेंट में कोई एरर हो। मेजरमेंट में एरर कब आता है? जब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में एरर क्यों होता है? इंस्ट्रूमेंट में एरर इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर छोटे डिजिट्स नहीं हैं जो फर्दर इसको क्लियर कर सकें। इसको अल्टीमेटली राउंड ऑफ होकर या तो 60 के पास जाना है या 61 के पास आना है। तो क्योंकि 60 से ज्यादा क्लोज है तो 60 में आ गया। इसी तरह 59 के पास आता है लेकिन ज्यादा क्लोज 60 से है तो 60 के पास चला गया। तो ये एरर इसलिए कि आपका जो मीटर स्केल होता है उसके ऊपर आपके मार्क्स लगे होते हैं, किसके अंदर? सेंटीमीटर में। अगर आप रीडिंग निकाल रहे हो मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, बल्कि आपको क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज रीडिंग लेनी पड़ेगी, अंदाजे से लेनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड वैल्यू लेना पड़ेगी। इसी तरह अगर आप थर्मोमीटर यूज करते हो तो थर्मामीटर जो एनालॉग थर्मामीटर होता है जिसमें मार्क्स लगे होते हैं, तो वो मार्क्स के अंदर 0.5 का डिफरेंस होता है। यानी रीडिंग 1 है तो फिर 1.5 है, फिर 2 है। तो वहां भी अगर 1 और 1.5 के दरमियान आप कहीं खड़े हैं तो आपको अपना एस्टिमेशन से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हर जगह ऐसी जगह जहां पर एरर होगा वो किससे बताया जाएगा? एरर बार से बताया जाएगा कि यार एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने ये रिकॉर्ड की है, बट इसमें जो डिविएशन है, इसमें जो चेंज आ सकती है, वो चेंज ये है। जैसे हमने बताया कि यहां ये चेंज आ सकती है, ये चेंजेस सारी 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। अब इसमें बात यह है कि अगर आपको कोई सवाल अब यहां तक है तो पहले पूछ लें, फिर मैं अगली बात की तरफ आता हूं। शाबाश शरीफ, मैं देख रहा हूं मोबाइल को, कोई सवाल है तो पूछें। शाबाश, हरी अप। यस, यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अगर तो कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि कल जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी अबाउट व्हाट। सबसे पहली बात तो आप सबको ये क्लियर है, आपको याद है कि हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू स्टडी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, न्यू बुक ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एफएससी फिजिक्स 11 क्लास, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें से हम, बिकॉज ये मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं जब भी कुछ बच्चों को टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें हर चीज़ क्लियर कराऊं, उनकी कोई भी टॉपिक, कोई एस्पेक्ट रहने ना पाए, ताकि उन्हें बाद में परेशानी ना हो। तो इसलिए हम ये ग्राफ्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट 2 डेज भी हम ग्राफ पर रहे हैं, आज ये तीसरा दिन है, और हमने ग्राफ, एरर बार्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, डोनट ग्राफ सारे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सीख भी लिए हैं। उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद जो हम टॉपिक कल इंशाल्लाह ताला करेंगे दैट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन, और इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम ग्राफ। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है कि किस तरह लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ को इवेल्युएट करते हैं। तो जब हम ये कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, और इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम्स फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर हम सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, काइनेमेटिक्स और वेक्टर्स। और असल जो फिजिक्स है वो स्टार्ट ही वहां से होगी। ये तो अभी बेस है, और बेस लाइन में आपको पता है मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है इट्स प्योरली फिजिक्स, और फिर फिजिक्स में तो आपको पता है कि मैथ्स हर वक्त तो रहेगा ही रहेगा, मैथ्स के अलावा फिजिक्स का गुजारा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आज के लिए यहीं पर कंक्लूड करूंगा। कल इंशाल्लाह विल टेक द क्लास एट 4:15 शार्प, और आई होप कि आप लोग खुद भी अटेंड करेंगे और अपने दोस्तों से भी कहेंगे, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो आए, मुझे प्रॉब्लम्स भेजें। इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व, ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, टू simplify so that you people can understand. Thanks a lot for joining your time, and Allah Hafiz.